From Asia's highest peaks to its valleys downstream, how people and wildlife are coping with climate change. Voices from the roof of the world. मेरा बचपन में तो बहुत ही बड़ा, कोई 4-5 फुट पड़ता था सर्दियों में ना। ये बीच वाला गली है खाली, ये बस छत के ऊपर का बर्फ हटा के बढ़ जाता है। पहले हमारा जमाने में तो सही टाइम बर्फ पड़ता ना, या गर्मियों में बारिश आएंगे, सर्दियों में बर्फ पड़ेंगे, तब जाके फसल होगा। खेती तो वही बस जो नंगा जो हरा मटर आलू वही करता है, वही होता है, बाकी नहीं होता है। बचपन में बहुत बरता है, इतना बर्फ गिरा है ना, बाप रे, यहाँ से जाने का बहुत मुश्किल होता है, इतना गिरा। जब बर्फ गिरेगा तो बहुत सारे मटर आएगा, बहुत सारे पैसे मिलेगा ना, जितना भी पड़ेगा ना बहुत अच्छा है। बर्फ नहीं गिरेगा तो बहुत मुश्किल है यहाँ। Lanzom and Chilkat both live in some of the world's highest inhabited villages in Spiti district, Himachal Pradesh, India. It's a high Himalayan desert that is home to many endangered wild animals like the snow leopard and Himalayan wolves. This roof of India is a rare surviving outpost of Tibetan culture. The semi-nomadic settlers of this valley rely heavily on livestock for their survival. The yaks, cattle, horses and sheep that plow their fields and support their livelihoods are also deeply connected to the spiritual lives and the culture of the people. Situated in the rain shadow of the Himalayas, Spiti suffers from sparse vegetation and a dry climate. There is only one harvest a year. In our place, we had very limited crop. One of that was barley. Barley is like, our main crop. If you see for your breakfast, it's barley. In lunch, traditionally, it's barley. And when it comes to brewing, it's again barley. It's holy because it's used everywhere. All of Spiti's 500 villages rely on snowfall for their water. Snowfall that is increasingly becoming erratic. A warming climate has shrunk the glaciers, reduced the annual snow cover, and degraded the permafrost, all in a region called the world's third pole. Runoff from melting glaciers reaches Lanzom's village, Kibber, in June, but the sowing season begins as early as April. So the villagers have devised an ingenious irrigation system. Snowmelt from the sacred Kanamo peak is collected in kuls or small ponds throughout the year. The villagers have built kyaris or embankments to channel the water into their fields below, taking advantage of the natural slope. Lanzom and the other women are in charge of irrigation
and the daily distribution of water. Whenever there is a lesser snowfall in winters, we have lesser water in summers. These villages are totally dependent on spring water. Spring is dependent on Khan. Khan is like glacier. Glacier has a base, it has a stock. If there's a good snowfall, it stocks up well. हमारा जीवन पूरा बर्फ पर निर्भर है। यह हमारे लिए बर्फ नहीं अमृत बरस रहा है। तो ग्लेशियर भी ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते जब तक बर्फ नहीं पड़ेगा। जितने भी ग्लेशियर यहाँ दिख रहे हैं पहले से बहुत कम हो गया है। इस साल तो मेरे को लगता नहीं पूरा फसल हो पाएगा क्योंकि बर्फ बहुत कम पड़ा है। अब गर्मियों में अगर बारिश अच्छा पड़ जाए तब तो ठीक है। अब बारिश का तो बहुत ही कम है यहाँ पर। 50 सालों में तो काफी बदलाव तो हुआ। अब रोड निकाला, हरा मटर आया। अब तो लोग जिम्मेदार लोग इनके पास जो ज्यादा जमीन है अब तो हरा मटर बीज करके लाखों कमाता है। Peas are the green revolution of Spiti, but require a lot more water than the traditional barley and black peas. जो ओम लसो मणिपुर में बोलते हैं ना, तो जैसे जैसे कीड़ा होता है तो ध्यान ऐसे देता कि जो मेरे हाथ से जो कीड़ा मोड़ी मर जाए उसको वो मिले, शांति मिले। ओम मणिपुर में हूँ। जैसे या वगैरह भी तो औरतें ज़्यादा और या लोगों को भी तो जितना थकावट हो वो दूर हो जाता है। लसो मणिपुर में बोने के बाद या का थकावट दूर हो जाता है। सर्दियों में तो बर्फ नहीं पड़ा ना। हफ्ते पहले बर्फ पड़ा, ठीक पड़ा है तो लोग अभी बिजली शुरू करे बर्फ का तो उम्मीद छोड़ दिया। अब गर्मियों में हमारा बारिश की उम्मीद है। बारिश आ जाए तो फिर फसल ठीक आ जाए, ना तो ये बिजाई वैसे वैसा ही है। The snow cover of the Himalayas in Himachal Pradesh was down by 18% in 2020. In 2021, Lahaul and Spiti received just 96 centimeters of snow, the lowest in a decade. Ancient irrigation systems which depend on snowmelt aren't working anymore. So the people of Spiti are turning to spiritual leaders and prayers. In April 2021, senior monks were asked to pray for rainfall to save this year's crop. Lamaranga lo dun le pose. Lo dun rosene chiung gobar lama ruzi lo gobar today. Yes, and in your car, the green giblo mega, Talo sausage car, Kamboka, Quimbo mega, Talo can console you. What is in it? Car pusa pegu mega, Taka, car mango giblonga, car gypsy sezelo. Then I do pusa pegu mega, Dang didn't car mess in it and pusa pega. तो करता है। हाँ, बर्फ ना आए, बरस नहीं आए, उसी साल तो बस पूजा ही पूजा, टना मना देखा के जब बर्फ ही नहीं आया तो टना मना करके थोड़े आएंगे। लोगों का बेम है ना, मैंने वहाँ से नहीं आ रहे बोलते, वहाँ जाके कुछ टना मना करता है, फिर थोड़ा पानी मिल जाता है, फिर वहाँ से नहीं आते क्योंकि मिट्टी रेतीली जगह है
पानी वहीं रेत में खा लेता है। जाने बंद करके थोड़ी पानी आएगी, ऐसा है। 500 kilometers west of Spiti lies the valley of Zanskar. It's another high mountain desert spread across the Himalayan, Zanskar, Ladakh and Karakoram ranges. With similar geography and culture as Spiti, but an even harsher climate, Zanskar faces the worst of the water crisis. Since the year 2000, the glaciers of the Hindu Kush Himalayan mountains have lost a vertical 1.5 feet a year, double the rate of the previous 2 decades. Over 800 Zanskar glaciers, studied from 1991 to 2014, have lost 13% of their total mass. The impact of glaciers on my life has been very direct. I come from a village called Stongde here, and it's on the top list of the examples you have of villages who have scarcity of water. All the villages you find in Zanskar completely depend on glacier melt. We have water days during growing season, and in a day, 7 families have to share the glacier melt that comes into the village. The most famous saying in Ladakhi would perhaps be "Chu med na yu med." You know, if you have no water, you have no settlement. People in Zanskar completely depend on subsistence farming. And top of that, it's a transhumance culture where we are semi-nomadic race of people, taking our cattle during the summers or warmer days to upper pastures and bringing them back during autumn, and then looking after them for more than half of the year. We could see glaciers vanishing, the size and area of glaciers with an observable eye. We don't have strategies to actually limit the melts. What happens to the glaciers in Zanskar and Spiti provides scientists with evidence of the extent of climate change. Located in Lahore, near Spiti and Ladakh, the Chota Shigri is one of the most studied glaciers of the Himalayas. I started in 2008 studying this glacier, and I think since ever I have made more than 30 expeditions. It's always like, glacier is calling because the landscapes are beautiful, and the water resources we are studying actually, they are also very, very important for the downstream communities. Basically, glacier is a storage of ice, that is frozen water. During winters, it's accumulating snow. If everything is fine, there is no global warming, the amount of snow coming to the glacier at annual scale will go through melting during summer season. We have been observing Chota Shigri Glacier since 2002. Every year we locate its snout position, and we see the average rate of receding over last 18 years is around 11 meters per year. So that means 11 meters length of glacier is lost every year. After 2050, our models, they are telling us that the snow and glacier melt will reduce in rivers of the Himalayan region. So that means we may have floods till 2050, and then we may have drought situation after 2050. कीपर में स्पेशल मटर, यहाँ की मटर बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है।
इस साल थोड़ा रिजल्ट थोड़ा लेट हो गया ना, सर्दियों में बर्फ ढंग से नहीं पड़ा है ना। बर्फ का जनवरी, दिसंबर, फरवरी में पड़ना चाहिए मेन, फिर बारिश होना चाहिए मई, जून, जुलाई में, फिर अगस्त में मटर शुरू हो जाता है ना। इस साल फसल इतना अच्छा वाला नहीं है, इतना वो हमारे ये देख मटर वगैरह बहुत कम जैसा है ना, आधा जैसा है। एक खेत में 10 बोरी निकलने वाला है तो आज इस साल 5 बोरी, 6-7 बोरी इतने निकलते, आधा ही हो गया। अब ये तो मौसम का चक्कर, कभी तो बहुत ज़्यादा पड़ना, कभी बहुत कम पड़ना, ये तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही लगता है। जैसे पिछले साल तो लगभग अच्छा पड़ा था, इस साल जैसे बर्फ़ भी बहुत कम था और सर्दी भी बहुत कम थी, तो ये तो पुराने जैसे नहीं था। बदलाव जैसे बहुत ज़्यादा पड़ना, बहुत कम पड़ना, ये सब अच्छा बदलाव नहीं लग रहा है सबको। एक्चुअली हम लोग बर्फ़ का उम्मीद करते हैं दिसंबर में पड़ जाए, ताकि वो जो बर्फ़ पड़ते हैं वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से मेल्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन तक पानी रहता है। पर एक्चुअली इस साल बर्फ़ पड़ी मार्च में, तो उस टाइम तो टेम्परेचर गर्म हो जाता है और बर्फ़ एकदम पानी बन के ऊपर से निकल जाता है और ज़मीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे जो चश्मे के पानी थे उसमें कमी होते हैं। यहाँ पे मेरे एक पड़ोस में रहते हैं, उनके पास 4 खेत है, तो इस साल बर्फ़ नहीं पड़े तो उन्होंने खेत बीजा ही नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में एक रूल है कि बड़ा घर छोटा घर, जो बड़े घर के पास पानी होगा एक दिन सिंचाई करेंगे, एक दिन आराम करेंगे, फिर एक दिन सिंचाई करेंगे, ऐसा है। बड़ा घर का, छोटा घर का ऐसा है कि 2 दिन आराम करेंगे, तीसरा दिन जाके सिंचाई करेंगे। और एक ऐसा भी फैमिली मेम्बर्स है जिनके पास पानी है नहीं, बिल्कुल ही ज़मीन है उनके पूर्वज के, पर उनके पास पानी नहीं है। ये सारे पानी की वजह से रख दिया ये लैंड पूरा, फिर पड़ी भी है। पहले तो साल में आते समय तो पूरा खेत लगाता है, मटर होते हैं, आलू होते हैं, गोभी होते हैं। अब यहाँ के बहुत साल हो गया, 6-7-8 साल हो गए, और नीचे वाले खेत तो बिल्कुल ही नहीं लगाए, खाद ऐसे ही पड़ा वैसे। यहाँ से नीचे तो पूरा बिल्कुल ही नहीं लगाए ना, आधा यहाँ से लेके ओ परे से ओ परे 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 तक। अब यहाँ से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं ले ना पानी, पूरे ऐसे जमीन खाली पड़ा है पानी की वजह से। ये चोरों लोगों का तो बहुत मुश्किल होता है जी, फिर ये घास कम नहीं हो तो घास खरीदना पड़ता है। इस साल तो गुजार भी नहीं है जी। हम लोग तो जो गर्मियों में कमाता है वो सर्दियों में तो खाता है, फिर पानी नहीं आएगा तो फिर हमारे को तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर तो कुछ खाने के लिए नहीं रहेगा ना, फिर शायद इधर उधर से काम ढूंढना पड़ेगा, लेबर का काम। कभी ऐसा भी सोचता है कि अब छोड़ दें, अब फसल नहीं होता तो फिर बैठने का कोई फायदा नहीं, और कोई इनकम सोर्स है नहीं, फसल पे ही नहीं भरे पूरा। पहले तो हमारे यहाँ इनकम सोर्स ये फसल होता, फसल के बाद हम लोग घोड़ा पालते थे और घोड़े को हम लोग रेल में बेचते थे, पर पहले से बहुत कम हो गया है। My biggest fear in the region is also that most of these regions like Zanskar in the Himalayan belt will have to shift in the coming years. Probably in next 20 to 30 years we'll be actually climate refugees. But the migration has already begun. A decade ago, the villagers of Kumik in Zanskar watched their water dry up completely, forcing them to relocate. In the next 3 decades, climate change will force 200 million others to leave their homes.
Azaga choose one more charges which is Sengaja Yokuga, government is a star. Loga Babs Yonzile. Lasanaja Trumpura Tarkelji Chamadu. Ika Yon Stengaja Riban Lo Nishuzi some Charugle, Nishu Taldamzik. There's some Langajang, I be Memegune Abama when it tastes the Ura Tuesday, Menat Tuesday, Tuesday. This thing now Hongaji government Laji Juapulven. Dasanga government Charji Monkuli, Tanga Yot, Jenga, Gorontopa, on Gorontopa left to middle. Jang Azushi. Facility left to middle. Runtopa, Naja Road Colonel Mata, Naja Chui Colony support him and Kong Tang Yot on Goron Langa Chang Nija Zigna, detail, Chang Malabi. Naja Street public has gun money. The overall consciousness of the Himalayan region is such that they believe in spirits, and water spirit is probably the supreme one. This belief in spirits and our behaviors in the Himalayan belts have actually protected and preserved the fragile ecosystem here, the little that we have. Over the years, with development and government intervention, one thing they couldn't take into consideration is these beliefs that have made us survive in these harsh conditions. And that is a sad thing to see, because ultimately this is going to directly affect the lives of the people who stay in the Himalayan region and the wildlife, the waters here. Everything is going to impact. Local knowledge and indigenous practices may hold the key to combating climate change, especially in isolated areas. But traditional wisdom is often overlooked by the modern world, with sometimes tragic consequences. तूफान आ रहा जबरदस्त कंपनी की तरफ जा रहा है ये कंपनी गया अरे मोरियार से हट रहा है ये मोरियार से मोरी यू भी हेल्प नो एक वहाँ पे भी खड़ा है पापा शायद पापा बैराज के ऊपर एक आदमी खड़ा है पापा वो देखो ए बाप रे ये तो वहां पर ले आ गए कबली वो एक आदमी है वहाँ पे So what happened in Chamoli disaster was there is a peak called Ronti Peak, and just below that peak there was a glacier, hanging glacier, and that glacier slipped with its base together, and this mass came down in the valley, hit the valley floor, and the energy released by that impact was around 15 times of Hiroshima bomb. The Chamoli disaster killed more than 200 people. But it was just one of the many climate change disasters that hit the Himalayan region. Thawing permafrost and torrential rains unleashed landslides and avalanches. Melting glaciers created hundreds of unstable high-altitude lakes that can suddenly burst through debris barriers, flooding the valleys below. In 2021 alone, there were 35 major landslides, 17 flash floods, and 121% more cloudbursts in the state of Himachal Pradesh. We have so many evidences around us. So it is surprising if somebody is saying that climate change is not happening. We just need to open our eyes and see how the things are changing around us in our own lifetime. It's not a regional issue, it's not a national issue, it's a global issue. And we should take in consideration of research papers and reports imbibed into policy making. And that can only happen if we can bridge the tradition or the indigenous people with these researchers.
Pishu has been facing water scarcity for a long time. And there's already a canal construction from the government that never actually was finished. Navikarna Trust took matters into their own hands. The organization aims to create clean and sustainable water supplies for the parched villages of the Trans-Himalaya. Their pilot project was to lift water to the upper reservoir of Pishu using a solar-powered pump. इनिशियली हमने सोचा था कि स्प्रिंग से लेके सीधा जिंग जो अपर रिजर्वॉयर है वहां तक के लिए हम पानी ले जाएंगे, लेकिन वहां तक हमारे बजट के हिसाब से काफी एक्सीड हो रहा था, तो हमने सोचा कि एटलीस्ट गांव तक ले जाते हैं फिलहाल। The project was crowdfunded on social media, where it raised $7,000. Drive connected. Okay. कर दूं? Okay हाँ। चला frequency आई। पर्दो चिकेरा हाले आमा छमा सा ठुजे में ताला बा ठुजे में ताता सा छुले जेमो संबांगा जा समझो ताना हिपो लुताना हिपो राले यार झुले दे तरुइना ठुजे जी दे निजा पा खुशार दा तंगा जा जी को मा निजता हो गयाल जाना मम्मा समझो यम जान ताजरा This small success shows the key to ensure a future of sustainable water. Combine renewable energy with the power of community participation. You know, it could be a story that inspires other villages, and inspiration could spark a fire, and then we want this fire to grow bigger and bigger all across Himalayas. Zambolila jiye pazaye, zambolila jiye pazaye, zambolila siri pazaye, zambolila siri pazaye, zambolila siri pazaye.